Good morning, students. Welcome in science class. Yes, beta, in this class, we will start a new lesson, lesson 12, force, work and energy. Okay, in this class, we will cover only three topics. But first, force, types of force and effects of force. Okay. Yes, beta, first topic is force. As you know that beta, you do different kind of activities during the day, and some activities involve pushing and some involve pulling. Okay, now let us take an example of the door. क्या है बेटा ये आपने, this is the drawer. Okay, when you open the drawer, you just pull it. Okay, when you close the door, you push it. Okay, so these type of pulling and pushing, that will happen only when you apply force. Okay, this type of pulling and pushing, that will happen when you apply force. तो force क्या है बेटा? Force is pull and push. Okay, तो force क्या हो जाएगा बेटा? Pushing and pulling is called force. Any push or any pull, that is called force. Okay. Now the second topic is types of force. Okay, force may be balanced or unbalanced. Force आपका balanced force है, unbalanced force है. There are two types of force, balanced force and unbalanced force. Okay, let's take an example of drawer. That is of drawer. This is drawer. Okay, when I apply a force from this side, the drawer will move in this way. When I apply the force from this side, the drawer move in the direction of the force that we applied. Okay, so this type of force is called unbalanced. But when I apply the force on the drawer from both the side, अगर मैं दोनों तरफ से ड्रॉर के ऊपर फोर्स लगाती हूँ, the drawer will not move, and such type of force is called balanced force. Okay, I again repeat this example. When this is the drawer, when I apply the force on the drawer from this side, from left side, the drawer will move in this direction, left direction. When I apply the force from right side, the drawer will move right direction. Okay, this is the unbalanced force. But when we apply the force on both the side, दोनों तरफ से मैं force apply करती हूँ, then the drawer will not move, and such type of force are called balanced force. Okay, तो balanced force क्या है बेटा? When the force applied from both the side on an object. अगर हम force apply करते हैं एक object के ऊपर दोनों की तरफ, for example tug of war. गेम होता है ना बेटा, in the game of tug of war, when the force applied on the rope from both the side, the rope will not move. ठीक है, and that type of force is called balanced force. Okay, and unbalanced force क्या है बेटा? When the force are unequal, force applied from both the side on an object are unequal. ठीक है, the object will move in the direction of the force. जिस डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, the object will move in that direction, and that type of force is called unbalanced force. Okay बेटा, so force are of two type, balanced and unbalanced. Topic is effect of force. Effects of force. Yes बेटा, we cannot see or touch force. हम फोर्स को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, but we can see what force can do. Okay, when we apply any force, what force can do, we can see only that things. So effects of force, when we apply any force to any object, what type of effects a force can do is, first, force can move an object.
when we apply a force on a body, force help to move an object. Okay, for example, when a man pushes the cart, when you apply force in this bike or in a car, ठीक है, it start moving. It will start moving. Okay, जब हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव करने लगेगी. So force can move an object. Now second है बेटा, force can stop a body. When we apply force on a moving body, it stops the movement of the body. ठीक है. Same example, when any car is running, when any bike is running, when we apply brake on the, when we apply force on the brake, then it will start, then it will stop. Okay, the force can stop a moving body. Now third है बेटा, force can change the direction of the body. When we apply force on a moving body, it can change the direction of the body. Okay, it will change the direction of the body. When we apply force on the body, on the moving body, on a car, on a bike, on the bicycle, then force can change the direction of the body. Now next, for example, when a moving ball is hit with a bat, the direction of the ball will change. अगर हम बॉल पे बैट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जो डायरेक्शन होगी बॉल की, दैट विल चेंज. नेक्स्ट विल बी फोर्स. फोर्थ विल बी फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, व्हेन वी अप्लाई फोर्स इट मे कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. For example, the shape of the toothpaste tube change. When we apply force on the tube, ये आपकी ट्यूब्स है बेटा, ठीक है. इसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो आपकी इसकी शेप को आप चेंज कर सकते हो. ओके, तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई द शेप ऑफ द क्ले, शेप ऑफ द फ्लोर. ओके, आटा जो आप गूंथते हो उसकी शेप भी आप चेंज कर सकते हो, क्ले की शेप भी चेंज कर सकते हो, बॉल की भी आप चेंज कर सकते हो, ट्यूब की भी चेंज कर सकते हो. व्हेन यू अप्लाई एनी फोर्स टू एनी ऑब्जेक्ट, you can change the shape of an object. Okay, so these are the effect of force. First, force can move an object. Force can stop a moving body. Force can change the direction of the body, and force can change the shape of an object. Okay, now we will start reading. Okay, that is lesson 12, force, work and energy. Force, the push or pull on an object is known as force. ठीक है, I have already told you that any push or any pull. ठीक है, when you open the door, you just pull the gate. When you close the door, you push the gate. So any push or any pull, that is known as force. Force is exerted by pulling the door to open it. We apply force for opening the door. कैसे करते हैं? That force is exerted by pulling the door. जब हम डोर को पुल करते हैं तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, and that will help to open the door. Okay, now next example है बेटा, ये देखिए. Force is exerted by the man to push the cart forward. In this picture, man apply force to push the cart. ठीक है, इस कार्ट को पुश करने के लिए मैन अप्लाई द फोर्स. तो फोर्स क्या है? फोर्स इज a pull or a push. Okay, now force may be balanced or unbalanced. Force balanced भी होता है और unbalanced भी होता है. तो सबसे पहले क्या है बेटा? Balanced force and unbalanced force. First is balanced force. When the force applied from both the side on an object. ठीक है, both the side. When the force applied from both the side are equal, the object does not move. क्या है बेटा? ये रोप को ये दोनों बॉय खींच रहे हैं, ठीक है, और ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है ना, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं ना ये दोनों रोप्स को. एंड द फोर्स अप्लाई फॉर पुलिंग दिस रोप आर इक्वल. इक्वल है फोर्स, तो ऑब्जेक्ट जो होगी रोप डज नॉट मूव. द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, एंड सच फोर्सेज आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्स. Okay, when the force applied from both the sides are equal, the object does not move, that such forces are known as balanced force. In balanced force, beta, net
फोर्स क्या होगा बेटा, जीरो. नेट रिजल्ट क्या होगा, जीरो. ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो. ओके, द फोर्स इज बैलेंस सिंस द रोप डज नॉट मूव. ओके, now next है बेटा unbalanced force. When the force applied from both the side on an object are unequal. When the force applied from both the sides are unequal, the object move in the direction of more force. Object कहाँ मूव करेगी, जहां से ज्यादा फोर्स लगेगा. And such force are known as unbalanced force. Here two boys are there. Here one is weak boy and one is strong boy. ठीक है, द फोर्स अप्लाइड बोथ द साइड आर अनइक्वल. ठीक है ना, तो द ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मोर फोर्स एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके, रिजल्ट क्या है बेटा, द फोर्स इज अनबैलेंस्ड हिंस इट मूव टूवर्ड द स्ट्रॉन्ग बॉय. क्योंकि फोर्स अनबैलेंस्ड है, एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम है, तो जो ऑब्जेक्ट होएगा दैट विल मूव टूवर्ड द स्ट्रॉन्ग वन, मूव टूवर्ड द स्ट्रॉन्ग बॉय पुलिंग इट. Okay, now next force produced motion. Air pushes the dry leaves and make them move. The push of air help in flying kites. ठीक है, force क्या करते हैं बेटा, that will produce motion. When we apply any force to any object that help that object to move. Okay, तो air क्या करती है, air apply force to push the dry leaves and make them move. Air help in flying kites. The object always move in the direction of applied force. जिस डायरेक्शन से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव इन दैट डायरेक्शन. ओके, नाउ फॉर इफेक्ट ऑफ फोर्स, as I have already told you that we cannot see the force, ठीक है, but when we can see only what a force can do. हम ये नहीं देख सकते कि फोर्स क्या, हम फोर्स को नहीं देख सकते ना, लेकिन हम जो फोर्स लगाते हैं उससे क्या चेंजेस आते हैं, उससे क्या इफेक्ट्स आते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं. तो इफेक्ट्स क्या होते हैं फोर्स के, व्हेन वी अप्लाई फोर्स, फर्स्ट फोर्स कैन मूव अ बॉडी. When we apply a force to any object, that help to move that object. Force applied on a body make it move. Example, when a man pushes the cart, it moves forward, and when a man pulls the cart, it moves backward. Okay, when we apply the force, then we can move any object. Second, force can stop a body. The force applied on a moving body stop the movement of the body. When we apply force on a moving body, then that force help to stop that body. ठीक है, a cricketer fielder stop a moving ball by catching it. एक क्रिकेटर जो है, फील्डर जो होता है, वो स्टॉप करता है ना मूविंग बॉल को, या तो उसको कैच करके या उसको पैर लगा के किसी तरह से उसको रोक के वो उसको स्टॉप करता है, उसको उसकी मूविंग को रोकता है. ठीक है, तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. थर्ड इफेक्ट क्या है बेटा इसका, थर्ड इज दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी. When we apply force on a moving body, then we can change the direction of the body. Okay. अगर हम साइकिल चला रहे हैं, इफ वी रनिंग बाइसिकल, देन बाय चेंजिंग द हैंडल, बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द हैंडल, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बाइसिकल. ओके, बाय सेम विद द कार, सेम विद द बाइक. ठीक है, तो किसी भी चीज पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट बॉडी. When a moving ball is hit with a bat, the direction of the ball changes. Okay. Now force can change the shape of an object. Okay, when you apply force on the clay, on the rubber or anything else, on a tube, on a bottle, then it may change the direction, change the shape of the object. Force applied may cause a change in the shape of the object. These are the daily life example beta. You can use these in your daily life. Okay, आप यूज करते हो ना, यू हैव ऑलरेडी यूज दीज टाइप ऑफ. आप अगर प्रेस करते हो किसी भी ट्यूब को किसी भी बॉटल को, वो स्क्यूज हो जाती है, यानी कि उसकी शेप चेंज हो जाती है. क्ले को आप मॉडिफाई कर सकते हो डिफरेंट शेप्स में. तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द शेप ऑफ अ टूथपेस्ट ट्यूब चेंज ऑन प्रेसिंग. ओके, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. तो यू हैव टू रीड बेटा पेज नंबर 132 and 133, only effect of forces. ठीक है, in the next class we will start topic type of forces. Okay,
So beta, you have to read page number 132 of lesson 12 and 133. Okay. Page number 132 and 133 of lesson 12, force, work and energy. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.